हेलो गाइस, दिस इज वर्तिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बेसिस पे वेदर कैसा है ये प्रिंट कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा है और ह्यूमिडिटी 90% के इक्वल या 90% से ज्यादा है तो वेदर होगा हॉट एंड ह्यूमिड। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा और ह्यूमिडिटी 90% से कम है तो वेदर होगा हॉट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है और ह्यूमिडिटी 90% के इक्वल या उससे ज्यादा है तो वेदर होगा कोल्ड एंड ह्यूमिड। एंड फाइनली अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है एंड ह्यूमिडिटी 90% से कम है तो वेदर होगा कोल्ड। सो लेट्स राइट अ कोड नाउ। सबसे पहले हम यहाँ पे दो यूजर इनपुट लेंगे। temp is equal to int input enter temperature in Celsius, वैसे ही humidity is equal to int input enter humidity percentage। ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ टेम्परेचर इज ओके, सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। इफ टेम्परेचर इज more than equal to 30 डिग्री सेल्सियस and humidity is more than equal to 90%, print hot and humid. Elif temp is more than equal to 30 and humidity is less than 90, print hot. Elif temperature is less than 30 and humidity is more than equal to 90, print cold and humid. And finally else print cold. Okay, so let's run this program. Enter temperature in Celsius 45, enter humidity percentage 95. So it's hot and humid क्योंकि ये हमारा इस वाले रेंज में आया है, यानी टेम्परेचर भी 30 से ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी 90% से ज्यादा है। अब हम दूसरा लेते हैं। एंटर टेम्परेचर 30 एंटर ह्यूमिडिटी 10। इट्स हॉट क्योंकि ह्यूमिडिटी 90% से कम है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।